Okay, moving further, let us talk about the essential walls of a flower. So who are the essential walls? It is the Androecium and the Gynoecium. These are called as the essential walls of a flower. So Androecium is the main reproductive walls. Its individual members are called as the stamen. If the stamen is sterile, it is called as a staminode. जैसे जिम्नोस्पर्म के पास माइक्रोस्पोरोफिल हो, एंजियोस्पर्म के पास होता है स्टेम. Okay, so we can equate the two. ऐसे. Now, a typical stamen shows the presence of a filament, which is the stalk. ये स्टराइल पार्ट, क्योंकि कुछ पोलन ग्रेन्स वगैरह नहीं बना, लेकिन उसके डिस्टल एंड पे, ये वाला एंड प्रॉक्सिमल है क्योंकि वो अटैच है थैलामस, ये वाला डिस्टल एंड, देयर यू सी द प्रेजेंस ऑफ अ ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एंथर, जो जनरली ऐसे दो लोब्स होते हैं, सो उसको बाइलोब्ड करते हैं, और यहीं पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फर्टाइल पार्ट. ओके, if the stamens are many and they're free, okay, बहुत सारे stamens हैं और सबके सब एक दूसरे से फ्री है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पॉलीएंड्रस. स्टेमन्स फ्यूजन भी दिखाते हैं, एंड दिस फ्यूजन, let us talk about cohesion within the same. Okay, like see this condition. Okay, where if the anthers are fused and the filaments are free, anthers are fused and the filaments are free, it is called as syngeny. Okay, but if the anthers are free and the filaments are fused, it is called adelphi. It is called as adelphi. And this adelphi cohesion of stamens is of three types. So initially cohesion is of two types, syngeny and adelphi. And adelphi, जो चार्ट में दिखाया गया, is of three types, monoadelphous, diadelphous, polyadelphous. मोनोडेल्फस में देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंथर्स हैं, बहुत सारे एंथर्स हैं. ये नहीं बच्चों, ये येलो वाले बहुत सारे एंथर्स हैं, फ्री है, लेकिन वो फ्यूज होके एक ही ट्यूब बना रहे, स्टमाइनल ट्यूब. सो उसको बोलते हैं मोनोएडेल्फस बिकॉज इट इज फॉर्मिंग वन स्टमाइनल ट्यूब. बहुत सारे एंथर्स हैं, मिलके एक ही स्टमाइनल ट्यूब बना रहे, ये वाला वन बंडल, वन बंच, चाइना रोजेस का एग्जाम्पल. वही लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंथर्स फ्यूज होके एक ट्यूब बनाया, एक एंथर अपना सेपरेट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दो स्टमाइनल ट्यूब. कंडीशन को कहेंगे डायडेल्फी, अरेंजमेंट को कहेंगे 9+1 अरेंजमेंट. एग्जांपल में आएगा पी. पॉलीएडेल्फस कंडीशन में यू विल हैव मोर देन टू बंडल्स, सो इट विल बी कॉल्ड पॉलीएडेल्फस कंडीशन. ये था कोहेजन के बारे में. नाउ कैन द एंथर शो अधेशन? यस. एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एपीपेटालस कंडीशन, एंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन it is the stamens which are attached to the petals. Okay, stamens are attached to the petals, so you have corolla, androecium के बीच में adhesion by an arch line. I'll show it. इसको हम कहते हैं एपीपेटालस कंडीशन. एग्जांपल आएगा सोलेनेसी फैमिली लाइक ब्रिंजल. Then there is epiphyllus या epipetalis condition. जस्ट हमने कुछ मिनट पहले देखा था पेरियान क्या था. अगर आप रिकलेक्ट कर सकते हो तो कैलेक्शन करोला के फ्यूजन को हम कहते हैं पेरियान. तो इन अ पेरियान it is the it is the it is the androecium का stamens which are fused with the perianth. So it is called as epiphyllus या epipetalis condition. Example is
Lily family, that is Liliaceae. Then we also find that in some flowers like salvia, there's a didynamous condition. टोटल 4 स्टेमन्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पे स्लाइड पे। अंदर के 2 टॉल है, बाहर के 2 शॉर्ट है, डाइडाइनामस। टेट्राडाइनामस कंडीशन जो दिखता है मस्टर्ड में, जो फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरे फैमिली है, जहां पे टोटल कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, अंदर के 4 टॉल, बाहर के 2 शॉर्ट। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ टेट्राडाइनामस कंडीशन व्हिच इज सीन इन मस्टर्ड। ओके, नाउ द gynoecium, which is called the female reproductive part. Okay, and its individual members are called as the pistil, or they are called as the carpel, where we have a carpel consisting of stigma, style, and the ovary. Okay, स्टिग्मा वो पोजीशन है जो रिसेप्टिव सरफेस है, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टॉक ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड एज द स्टाइल, एंड द बेस इज कॉल्ड एज द ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, एंड दीज ओव्यूल्स आर ऑन अ टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। ओके, एंड ये जो ओवरी कैविटी है, इट इज कॉल्ड लक्यूल। द प्लेसेंटा इज फ्लैटेंड, इट कैन बी a cushion like structure. If the pistil, that is the carpel, is one, the condition is called monocarpellary. Okay, जैसे मैंगो, कोकोनट, फेबेसी फैमिली में मिलता है। अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी में देखिए बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलामस, सारे फ्री है। अपोकार्पस, रोज, माइकेलिया, लोटस इसके एग्जाम्पल आएंगे। सिन कार्पस में स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फ्यूजन दिखा रहा है, कोहेजन दिखा रहा है, तो हम उसको कहेंगे सिन कार्पस। पेपेवर, मस्टर्ड, टमेटो, चाइना रोज, दिस कम अंडर द एग्जाम्पल। नाउ ovary can have a single ovule, or it can have many ovules inside. The example of a single ovule is rice, wheat, maize. Many ovules, papaya, orchids, watermelon, and citrus. So now what we observe is that if this is the ovary in a transverse section, और ये है प्लेसेंटा ग्रीन वाला, और उसके ऊपर है ओव्यूल्स, तो देखिए अरेंजमेंट होता है प्रॉपर ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर, और उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लासेंटेशन. So placentation is the arrangement of the ovules within the ovary. Look at this now. Where the placenta forms a ridge along the ventral suture. So this is a pea pod, and this one is the ventral suture. And in the ventral suture, all the ovules are arranged in 2 rows. Okay, so this is called marginal placentation. Example is pea. In an exile placentation, the ovary is multilocule. देखो बहुत सारे locules है इसके अंदर, compartments है, सेंटर में प्लेसेंटा है, एंड ओव्यूल्स सब सेंट्रल एक्सिस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. ओके,
एंड इट्स अ सेप्टेट ओवरी, देखो सेप्टाज है यहाँ पे, ट्राइलोक्यूलर, तीन लोक्यूल्स इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो ऐसे केस को हम कहते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन, वेयर द प्लासेंटा इज इन द सेंट्रल एक्सिस विद द ओव्यूल्स व्हिच आर बोर्न ऑन दैट सेंट्रल एक्सिस। एग्जांपल आएगा टमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। In parietal placentation, the third type, the placenta is towards the margin. Rather than margin, we'll say on the periphery of the ovary. And the ovules are also on the periphery. Okay. And this is called parietal placentation. Example to be mustard and argemon. मस्टर्ड में एक फॉल्स सेप्टम होता है जिसको हम कहते हैं रेपलम। फ्री सेंट्रल, यहाँ पे द प्लेसेंटा इज इन द सेंटर, but it is not septate. It is a unilocular ovary, and all the ovules are born in the central axis. लेकिन देखो सेप्टाज नहीं बनाया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल में आता है प्राइम रोज एंड डायंथस। Whereas in the basal placentation, students, the placenta is developing at the base of the unilocular ovary, which shows the presence of a single ovule. So for a more clearer picture, ये अपना ओवरी है, ये प्लेसेंटा है और ये अपनी ओव्यूल है, यहाँ पे बेसल पे है, so इसको कहेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल में आएगा मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड द पोएसी फैमिली।